May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sirs. Please be seated. Thank you, sir. So, please tell about yourself. My name is Mayank Jaiman. I am a native of 23 years old. Slightly louder. My name is Mayank Jaiman. I am 23 years old. I am a native of Alwar district, Rajasthan. I did my bachelor's from NIT Patna in electrical engineering, and my interest include doing meditation and chanting, playing badminton and teaching children. And this is going to be my second attempt for engineering service exam and second interview. Second interview. Yes, sir. Okay, very good. So, what do you teach children? Since during college I was the member of the group Sankalp Club, in which we used to teach the slum students. Okay. And you have done Sanskrit up to what level? 10th. Up to 10th. Yes, sir. Okay. So, what is it that you find fascinating about Sanskrit? Since most of the Gitas, Mahabharata, these are written in Sanskrit language. No, about the language. You found it boring, or you found it a burden, or you found it interesting? It is easier to communicate in Sanskrit compared to English, because it is based on the direct, say, for example, मम नाम मयंक अस्ति, तो मेरा नाम मयंक है, तो ये based on the whatever is written in this word by word, it written in the Sanskrit. So there is no such rule like subject plus verb then object. There is no such rules in which is lies in the English. Okay. Which other language do you think is close to Sanskrit in terms of the grammatical structure? Sorry, sir, no. German language. Anyway, you are from this place called Sakat? Sakat village, Sakat, Alwar district, Rajasthan. Sakat का क्या मतलब होता है? Sorry, sir, I If I say कि you are a millennial, इसका क्या मतलब हुआ? Sorry, sir. Have you heard this word millennial? Yes, sir. Millennium City, Gurgaon. हाँ? Millennium City, Gurgaon. नहीं, millennial. You are a millennial. Sorry, sir. तुमने सुना ही नहीं? कोई बात। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11th July 2001. तो 2001 में क्या चीज़ थी? क्या परिवर्तन हुआ? शताब्दी बदल गई। 1900 वाली शताब्दी खत्म हो गई और 2000 वाली शुरू हुई ना? 2001 से। तो इनको क्या कहते हैं? मिलेनियल्स कहते हैं। Have you heard this word? Yes, sir. तो क्या मिलेनियल्स की क्या खूबी या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लगता है कि पहले से अंतर हैं? 100 years में मिलेनियम चेंज होता है. हाँ, एवरी 100 years में मिलेनियल तो पूरा चेंज तो हो ही रही ना, सेंचुरी चेंज हो गई, 2000 स्टार्ट हो गया. आफ्टर 4 years दे लीप ईयर. एनीवे छोड़ो उसको. यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. यस सर. ठीक है. ये बताइए कि आई हैव एन इलेक्ट्रिक कार. When they gave me the RC, it is written valid for 15 years. 15 years, yes. Okay. So I go and challenge this. Why valid for 15 years? It's जो battery used in the electric vehicle, whose life span is around 10 to 15 years. I'll change the battery. My car, I'll change the battery, no problems. Then what is your problem? Why should you say, you are government, you say life is 15 years. Why? Is it fair and proper? I think जैसे government is now is
taking the scrappage policy to change the vehicles which are older than the 15 years, 10 years. So I think this can be the reason to change the electric vehicles. That is, government makes a policy which was originally for fossil fuels. Yes, sir. Fossil fuel Okay? based. There the argument was the technology may change, pollution may happen. But I am not using any fossil fuel. So I want to file a PIL against you, your government. Do you think any justification of scrapping an electric vehicle? No, sir, there is no polluting such this. It's not polluting. There's no justification. Okay. Okay, now look at it from the point of view of electric vehicle manufacturer. If electric vehicles are not scrapped, what will happen to their company? It will once they sell the vehicles, then and everyone started to using electric vehicles, then they will close. They'll have to close. Yes. Okay. So there is a problem there also. So it is their lobby which pushes the government that you should scrap. After 15 years. Whatever, 15 years, 20 years, whatever. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Mayank. So tell me why when we have power plants and when we transfer electricity from power plant to home, Yes, sir. we transmit at what voltage? From generation to generation. Let's to say powerhouse. Generation to powerhouse. The generation is around 11 volt to 33 volts at the generation level by synchronous alternators. After that, we increase 11 volts. 11 volts, 11 kilovolts and 33 kilovolts. Okay. After that, we use the step-up transformer for high voltage transmission. It reduces the losses, I square R losses. Apart from that, size of the conductor is also less material required, conductor material saving. If we transfer the power at high voltage. After that, at distributor side, there is a step-down transformer, which gives the voltage at distribution centers. At 22 volt, 400 volts if we want 3 phase, and the 22 volt, 202 volt, 20 volt for single phase. So why do we reduce this? Why we step it down? Why not keep it at 11,000 volts? The home appliances which are used are low voltage ratings, having low voltage ratings. We can make them high voltage rating. You can design the system as you want. This light is working on 220 volts. I can design it to work on 11,000 volt as well. If we design at higher voltage, then there is a high chances of electric shocks. So apart from there, more insulation is required. System can be more costly and complex system. No, but even at 220 volt also we get shock. Yes, sir. But the amount of shock, if we take the proper precaution, so then the amount of current is very in milliamperes. So it gets the little shock. More if we use the high voltage, then more, and the insulation required is more. Size of the appliances will be greater, so that we can provide the better insulation. Okay. Recently we are hearing a word, something called as brushless DC. That's the DC motor. Many of the fans, they have started replacing. What is this brushless DC concept? Sorry, sir, no idea. No idea? Okay. Can you tell what are the different losses in electrical circuits or electrical appliances? Electrical appliances. Let's say the fan motor is there. What are the different losses that you see? What is the disadvantage of using AC over DC? Disadvantage of using AC over DC. Yeah. For higher voltage transmission, the system required more insulation for the AC. Second one is the corona losses and skin effect are present in the AC. Third one is the there is a IR voltage fluctuation, which causes the affect the voltage regulation of the system. Have you heard something about hysteresis losses? Yes, sir. What are hysteresis losses? Hysteresis loss basically occurs due to the magnetic reversal of the core material. Okay.
So where these hysteresis losses will be present? Will these be present in DC? DC, the part such as armature core and PSU, since they are related to the AC, because the alternating voltage the armature, the voltage is alternating in nature. The hysteresis loss occurs only in the DC machine, the part only armature core and PSU, because they are related to the AC. Apart from that, there is commutator brushes, there is no hysteresis losses apart in the So can we say these hysteresis losses are only present in AC, not in DC? Yes, sir. Can we say? Yes, sir. Okay. What are the types of circuit breakers we have? Various types that depends upon the voltage ratings. Okay. Low voltage ratings and high voltage low voltage ratings may at homes we use the fuses, MCB, miniature circuit breaker. Okay. At high voltage side, vacuum circuit breaker, air blast circuit breaker, SF6 circuit breaker, minimum oil circuit breaker they have. Okay. So what is the difference between oil circuit breaker and air circuit breaker? There is a difference, basically the medium of arc quenching. Oil is used, if oil is used as a medium of arc quenching, then it is basically the oil circuit breaker. And the air is, if air is used as the arc quenching medium, then No, what is difference between these two? I know how these are used. Voltage level wise. Voltage level wise, and what else? What is the major criteria for deciding the type of circuit breaker? Generally, nowadays the SF6 is more used because it has several advantages. Or it works at a higher voltage up to 765 kV. SF6 can be SF6. What is reverse current? What is Reverse current. reverse current? If the alternator loses excitation, then it instead of giving the electrical power, it draws the power from the live bus. Okay. Then the direction of current is up, reverses. That is, I think. So what is the problem with reverse current? Okay. Do we install anything to protect our alternators from reverse current? Yes, sir. What? It is basically due to the failure of prime mover. When prime mover failures occurs, then instead of supplying current, it will draw the current from the live bus. For this, we use the reverse power relay. Okay. What are traction motors? DC motors are used for the electric traction, where electric supply is used for the traction purpose, such as railways. So railways, we use DC motors or AC motors? Nowadays in electrification, we use the AC motors. AC motors? Yes, sir. Why AC motors are preferred over DC motors? Because if we use DC series motors, because we can use either DC motors or AC motors. If we use the DC motor, it is at no load, it has very high starting torque. Apart from that, if we use DC, we have to step down the voltage up to the ratings on the DC motor. So you are saying that DC motors have very high starting torque. Yes, sir. Don't you feel that is a benefit for railways? Railway require very high starting torque. Won't the traction be very smooth in case of DC? For that, we have to change the voltage levels, so for more appliances required. I think it will make the system more costly or bulky. Okay, thank you. Sir. Have you seen this lightning in clouds? How does it happen? When the cloud having charges, either it disappears through the nearby cloud or it to the ground. This is actually the surge in the voltage happens, which is occurred due to lightning. Nowadays, a lot of casualties are happening because of lightning. So, what precautions should be taken? As a suppose person is going, so as an engineer, how you will advise he should be careful? As an electrical engineer, for the
protection of substation. We will use the lightning arresters we can use. Second one is overhead ground wire we can use, so that direct the voltage surge which direct disappears to the ground without affecting the substation operation. In case of in open field, suppose somebody is moving, so what is your advice to him if there is a lot of thundering? Stay indoors. There is no door, he is in the open field. There are a lot of trees, etc. So should he go under a tree or remain with the ground, or what is your advice as an electrical engineer, so that he should avoid this lightning? Let us say, sir is asking, let us say I am standing in a ground, playground. There is no, there are only trees and there is no house or somewhat like that. Then what should we do? बेस्ट मेथड क्या है, उसको क्या करना चाहिए? I will be stay at the ground. ग्राउंड मूवमेंट कम होना चाहिए, so व्हेन यू मूव देन ओनली द चांसेस आर देयर. ट्री में और ज़्यादा आने का चांस है. और बेटर टू लाई डाउन, जितना नीचे रहेंगे बेटर रहेगा. So tell me something about power transformer. What is power transformer? Power transformers is used as the generating station which operates at the full load. I am talking about power transformer, step up or step down transformer. It is a step up transformer. And then what is the difference between power transformer? Power transformer and distribution transformer is used as a distribution Suppose side. you are converting from 33 kV to 11 kV. What is that transformer? And from 11 to 220 you are converting. Then which is 11 kV to 220 voltage. That is distribution transformer. Okay. Or a step down transformer at the consumer's end of distribution. power side. transformer is from high voltage to low. Why do we transfer this electricity at a very high voltage like 132 kV or so? High voltage, Why not? When we require 220, we should take 220 only. When you are generating, it is already 220. Then why we step up and then step down? because if we advantage of using high voltage transmission is, first one is it reduces the current flowing through the lines, so I square R losses. Second one is if losses are reduced, the heating will be less, and third, it will improve the efficiency of the system. To avoid the losses. So have you seen this metro, this trams in Kolkata? Have you been to Kolkata? No sir. What type of voltage is used for trams? For ट्राम जो कलकत्ता में ट्राम चलता है उसको sorry sir, no idea. कितना होगा? 11 kV और 220 और Maybe electrical trains. इलेक्ट्रिकल ट्रेन. For now electrification of doing it is 25 kV voltage line used over at line which is voltage is 25 kV. 66 kV I think they are using. Okay, so you have studied some basic engineering subjects also in your first year. Yes sir. Any workshop training of? Yes sir. Which During was your favorite workshop training? Which lab you used to prefer? in first year there are workshop lab. Which one? Which was your favorite? Tell me just. I will ask from that only. Sorry, sir, yes. Not favorite. Okay, leave it. You teach children. Yes. What subject do you teach? Science and maths. Up to what level? 10th. Since I was during the college, I was the member of club, so we used to teach the slum students nearby who are living nearby college. What is square of 19? What is Square of 19. 381? Cube of 19. Sorry, sir. Let us say you are multiplying 2 digits on decimal, Yes, sir. right? How do you round off them? Rounding. If, for example, if there is a 38, for example, like 38.54, so we consider it is at 38.5. Let us say I am giving you a number. Yes, sir. The number is 485.3876. 0.3876.
7, 6. Round off up to 3 significant figures. 388 मतलब 0.388. 3876. Yes sir. इसको 0.388. Up to 2 significant figures. 39. Up to 1. 4. 0.4. If this number is 0.3875, 875. 5, up to 3 digits. 3. 0.3875. 0.387. Why not 8? Nearest digit, when we see the nearest digit, it is close to the 7 instead of 8. 75, 78. It is exactly in between. So This you must have taught. Three people can do a job. Let us say one person can do a job in 4 hours. Another person can do that job in 6 hours. Together they can do that job in how many hours? how many years? Hours. How many Ghante. hours? 4 hours and 6 hours. Three days? How did you calculate that? 3 hours? How did you calculate that? I am interested in the calculation. First I took the LCM of 4 and 6. It is 12. Then I need the concept. You have to teach me like I am a children of class 10th. I'm a child of class 10th. How you will teach this? if one person is doing 4 hours, 1 hour work is 1 by 4. If a person is doing work in 4 hours, the 1 hour work is 1 by 4. And another person is doing the work in 6 hours, so 1 hour work is 1 by 6. Then now they both are doing 1 by 4 plus 1 by 6. जो whatever we get the उसका रिवर्सल होगा वो 1. रिवर्स क्यों? क्योंकि अपन ने वहाँ भी रिवर्स किया है. क्यों? What is the logic behind this reverse? मुझे नहीं आता कुछ भी. मैं स्टूडेंट होके पूछ रहा हूँ. अब बताओ. वन कि वो जो आंसर आएगा वो आएगा मुझे सोच चाहिए उसके पीछे की. व्हाई वी डू द रिवर्स. और क्या पढ़ाते हो? साइंस. साइंस में क्या? साइंस में 10 तक का जो होता इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोथ आर कंबाइंड इन ए सिंगल बुक. सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स. इसमें फिजिक्स आर लाइक वर्क एनर्जी दिस आर एंड द रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स आर सम पार्ट्स आर देयर इन लेंस रिलेटेड टू मिरर इन द. Okay. In cars, on the side mirrors, right? And on the rear mirror from where we can see. Do you drive a car? नो. Okay. But you have seen a car, right? यस सर. Which mirror should we use? For side lamps we use the concave lens. Concave mirror. Why? It will use to see the scene behind in a small figure. Exact reason. If the object is at far distance, so it will see the image of that in a small. Which gives imaginary image and real image out of these two? Convex lens, convex mirror gives the image. And the concave? Because if the object is at infinity, then It will give the small object at the focus. It will gives the mirror at focus. how do you convert solar input into electrical input in a solar cell? It is basically works upon the principle of photovoltaic cell. When the sun photon lies on the solar panel, it excites the electron.
so that electron jump to the, so the energy band gap between the conduction band and the valence band reduces, so the more electron excites and enters into the conduction band and causes the photon current. So the, if I talk about the single, then output is DC. By using the inverters, grid-based inverter, we get the AC. The output of the single solar panel is around 0.5 to 0.6 volt. If we want more voltage, we can get into the series up to 12 volt to 24 volts. And after that, we convert using the inverter in AC. My last question. How many nadis are there in a human body? Because you do meditation, right? I know 7 chakras are there. But we do you do nadi shodhan? Pranayam? Pranayam, I don't do pranayam, I do the meditation and chanting. Meditation and chanting. What kind of meditation do you prefer? I want, whatever I chant, I want to see, listen and speak both at the same time. It will keep to concentrate. Whatever I listen, I want to speak, I listen and I want to see as well. So in Hindi, all the indriyas are focus. So it will increase the focus. There are how many indris? 5 indriyas. Name them. आइज, और हिंदी में बोल सकता हूँ सर, आँख होगी, जीभ और कान, स्किन, त्वचा, स्पर्श एंड नोज. That's it, sir. Okay. So how was your interview? I think I have to read about the whatever you asked starting. Sanskrit, I have to. Kindly wait outside, we'll call you back. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, please be seated. So how much did you score last time? 100 marks. 100 marks. Okay. So this time you'll definitely do better. There's no doubt about it. You're a smart candidate, but what you have written about your hobby, if you have been teaching children, then at least what you're teaching, you should be thorough about it. Because you're a good candidate. Don't freeze your hands here. Use them and smile. Put some energy into what you say. Okay? When you came, we had to tell you to be louder also. Yes. So, because people sitting on this side will be farther off and they'll all be 60 plus. So, you have to be louder. And ultimately, this world is energy exchange. Right? So, once if you are smiling, you are radiating energy. So, that will be a very big plus for you. Okay, बिल्कुल उदास ग्लूमी होके बैठ जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी. तुम्हारे अंदर से जो यूथ में से एनर्जी आनी चाहिए ना, वो थोड़ी ज़रूरत है, उसको भरो. ऐसा करना कि तुम इंटरव्यू वाले दिन 2 घंटे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लेना. ठीक है, सीरियसली, तो अंदर से तुम्हें और एनर्जी लगेगी. ठीक है, दैट विल हेल्प. क्या ड्रेस क्या रहेगा आपका? ये रहेगा. इसको मैंने सूट नहीं पहना. हाँ, तो ये अगर ये ऐसे रहना तो शर्ट थोड़ा सा आयरन करा लेना. हाँ, वो सर ट्रेन में आया था ना, तो वो कोई बात नहीं. हाँ जी. Mayank, I have observed few things. एक तो आपका गेट रैंक 25 है. यस सर. So that's a very good rank. People will expect a lot from you. आपका technical knowledge was good, but the way of speaking was not good, या फिर you were not able to express it. यस सेम. तो आपको वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस कर दोगे, योर स्कोर कुड बी 140 150. आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है. जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे उसमें कुछ में मैं आऊँगा, बाकी के आंसर वर ऑलमोस्ट लाइक करेक्ट. आपका कुछ डेटा थोड़ा सा गलत था. एक स्टार्टिंग में आपने कुछ डेटा बोला था विच वॉज नॉट करेक्ट.
आई हैव नॉट रिटन, आई हैव रिटन ओनली द डेटा वॉज नॉट करेक्ट। अगेन आपने कहा कि AC और DC मोटर में जो रेलवे में यूज़ किया जाता है दैट इज़ AC मोटर, जबकि आपने काउंटर बोल दिया था कि DC मोटर्स हैव स्टार्टिंग टॉर्क, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जो मैंने आपको हिंट भी दिया कि अगर DC मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है तो वो रेलवे के लिए अच्छा होना चाहिए। कॉन्ट्रैरी टू दैट DC मोटर ही यूज़ किया जाता है रेलवे में, और उसका प्रिंसिपल यही है कि दे हैव वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो आपका ट्रेन बहुत एक्सेलरेट करता है। ट्रेन तेजस वगैरह को देखोगे, अभी चालू हुई है और 100 मीटर्स के अंदर दे अटेन अ स्पीड ऑफ 60। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक। आपको पूरा आपके क्वेश्चंस वेल फ्रेम्ड थे आपके दिमाग में कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में बताया कि I² लॉसेस कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएगा, बट आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। जैसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा सर ने फिर वापस से वही पूछना पड़ा, बिकॉज उस टाइम वो जस्टिफिकेशन आया ही नहीं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो सब आपको बहुत क्लियरली बताना है कि सर स्टेप अप में ये करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर इज दिस, डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, शॉक लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। योर आंसर्स वर गुड बट कंसाइज नहीं थे, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, शायद पता हो शायद ना पता हो। वो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। क्वेश्चंस आपने अच्छे आंसर दिए, योर बॉडी लैंग्वेज वॉज गुड, इट वॉज वेरी पॉजिटिव। थोड़ा सा स्माइल करते रहो, थोड़ा सा सिंक में रहो, एनर्जी के साथ सिंक में रहो। अगर कुछ नहीं भी आता है तो इट्स ओके, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है, मैं कुछ बता रहा हूँ तो थोड़ा सा स्माइल कर दो, जिससे कि लगेगा कि हाँ सर, मतलब येस आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम नॉट नोइंग इट, ठीक है। और नीचे नहीं देखना है, नीचे देखना इज़ वेरी बैड थिंग। कभी भी अगर बात कर रहे हैं तो नेवर फील कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मतलब इट्स ओके यू टू एक्सेप्ट इट, गलती एक्सेप्ट कर लो बट नीचे देखना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यू आर वेरी गुड। वी फील दैट कि आपका लास्ट ईयर टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिले। माय प्रॉब्लम इज आई हैव टेक्निकल नॉलेज बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज लैक ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। हाँ, तो उसके लिए आप दिमाग में सोचना शुरू करो। जो भी आपको आंसर देना है वो आप दिमाग में सोचो कि मुझे बोलना क्या है। आप क्या करते हो, हिंदी में सोचते हो दिमाग में, और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहे हो। वो नहीं करना है, आपको सोचना ही इंग्लिश में ही है कि वाई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज यूज्ड, तो उसको दिमाग में ही सोचना है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हैज़ गॉट दिस एडवांटेज, दिस एडवांटेज, दिस एडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज। आपको डायरेक्टली दिमाग के अंदर ही चलना चाहिए, और वो प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोचें पहले हिंदी में सोच लिए फिर इंग्लिश में सोचें। सो वी फील दैट यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल, आपके बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू एक्सप्रेस इट। थोड़ा सा फ्लुएंसी लाना है, थोड़ा सा फास्ट करना है। मिरर के सामने जाके बोलो जितना जल्दी हो सके। सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लो जो आज हमने पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। इससे सही हो जाएगा, इससे सही हाँ परफेक्ट हो जाएगा। मुझे यही करना है। मेरे लास्ट ईयर भी चीज़ कम थे। हाँ, तो दिस कुड बी वन रीजन। दो तरीके हैं, एक तो मिरर के आगे कर लो क्वेश्चंस बना के, और नहीं तो तुम्हारे अगर 4-5 दोस्तों का ग्रुप है तो उनको बोलो पूछी जाओ, लेट देम ब्लास्ट यू, हो जाएगा कॉन्फिडेंस। बाकी मैंने जो स्कूल वाला पूछा था, या तो मैथ्स फिजिक्स साइंस मत बोलो, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट बोलो, लिमिटेड रहो उसमें, और थोड़ा सा उनका देख लो क्या क्या पढ़ाते हैं। बिल्कुल एब्सर्ड जा रहे थे, बिल्कुल एब्सर्ड। और मैंने कोई भारी भरकम सवाल नहीं पूछा, सब आसान था। कॉन्वेक्स, मिरर, अब बोल रहे हो लेंस मिरर, लेंस मिरर, ठीक है। दिमाग में कम से कम अब ये तो क्लियर होना चाहिए कि मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात कर रहा हूँ। वहाँ अब लग रहा है यार बच्चे कुछ पता ही नहीं है, डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, थोड़ा सा प्रेशर आया टूट गया। ये एक ऑफिसर के लिए खतरनाक है। कल मान लो कोई फेलियर हो गया, ठीक है, आपका कोई मतलब यूनिट है वो बंद हो गया, अचानक से चालू करना है, इमरजेंसी आ गई, तो आप तो मतलब हड़बड़ा जाओगे, टूट जाओगे। वहाँ पे बोल्ड डिसीजन, ठीक है यार जो हो गया, चलो सही करते हैं। पूरी टीम को बोलोगे ना चलो सही करते हैं, लेट्स गेट बैक। दैट इज द, आपको काम नहीं करना है, आपको होल्ड करके रखना है। जब आप खुद ही टूट गए, अरे यार क्या हो गया भाई, कैसे होगा पता नहीं, और ऊपर से बॉस बोल रहा है कि यार 2 घंटे में के अंदर ही चाहिए, यार सर नहीं होगा सर 2 घंटे में, सर 2 दिन लगेंगे, नहीं यार सर ट्राई कर रहे हैं सर, होगा होगा होगा, मोटिवेट करना है लोगों को। आप खुद टूटते हुए दिख रहे हो। मैंने वो चेक किया,
बेसिकली वो चेक क्या कर रहे हैं, फिर आप गर्दन नीची कर रहे हो, जब कुछ डेटा गलत हो गया, यार ये आदमी टूट रहा है और तोड़ो। वो बेसिकली आपको यही चेक कर रहे हैं, कितना टूट रहे हो, कितना फट्टे मार रहे हो। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है कि अंदर से आदमी कितना स्ट्रांग है। वो आप हो, आपकी आवाज़ में कामनेस है, चेहरे पे कामनेस है, बट आप अपने आप को बस केवल ये समझ लियो कि यार मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं बेकार हूँ, ठीक है, और ख़त्म है खेल। मात्र यही एक कारण है आपके साथ, क्योंकि 25 रैंक ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए सर मेरे लास्ट ईयर भी सेम इश्यू है इसका एक्सप्रेस का। जब तक ये नहीं सुधारोगे वो चलता रहेगा। रिटर्न में ज़्यादा लेके आओ फिर। तो लास्ट ईयर से बेटर ही है, लेकिन इंटरव्यू में तो रैंक सीट्स आर लेस ना, तो इफ यू वांट इंटरव्यू मैक्सिमम आएगा तो प्रेफरेंस के साथ डिपार्टमेंट। बट यू विल डू इट, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आप हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत। टेक्निकल नॉलेज इज व्हाट रिक्वायर्ड, वो आपके पास है, तो और डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि नहीं मुझे पता है, मुझे आता है, आई विल बी एबल टू आंसर इट। ये कॉन्फिडेंस लोगे तो वो आप आवाज़ भी आपके अंदर से आएगी, वो भी निकलेगी कि चलो मुझे पता है सब कुछ। ओके, सो यू विल डू इट। एम सिविल सर्विसेज है कि ये है? इसके बाद सिविल सर्विस भी है, इसके बाद सिविल सर्विस। अभी सिविल सर्विस अटेम्प्ट नहीं दिया? नो। फिर ऑल द मोर रीजन कि तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आप सिविल सर्विस के, जैसे मान लो क्रॉस क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस पे अपीयर कर रहे हो, तो मैं तो अभी तो नो कर दूंगा कि अभी आई डोंट हैव एनी प्लान टू अपीयर फॉर सिविल सर्विस। जब तुम्हारे सीवी में नहीं दिखा रहा है यूपीएससी, तो बोलो कि नहीं यार, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का मेंशन किया है इस सिविल सर्विस का। बोलो आई एम हार्डकोर आई वुड लाइक टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, ठीक है। जब पहले का दिया नहीं है ना, तो ठीक है, नहीं चल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। स्कोर आपका जनरली 105 110 आज की डेट पे है, बट यू कैन इजीली स्कोर 130 140 तक आराम से पहुंच सकते हो। स्माइल मारो यार, अभी भी तुम एकदम ग्लूमी, अब फिर भी थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। मेरी स्मेल में है तो ज़्यादा हो जाती है या फिर रहती नहीं है ये स्माइल पे भी पोस्टमार्टम मत करो, जैसे आते आने तो यार, कहीं ज़्यादा सोचो मत कि ज़्यादा होगी कम होगी, फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है स्माइल। थैंक यू सर। और संस्कृत का जो कंप्यूटर से लिंक है वो पढ़ लेना। संस्कृत का कंप्यूटर में कहते हैं कि मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, आइडियल, इट्स मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, उसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है।